पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू डिफरेंट मेथड्स। टुडे आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले को रिवाइज करना होगा। नेशनल इनकम दैट इज नेट वैल्यू एडेड प्लस NFIA, or we can say NNP at FC equals NDP at FC plus NFIA. How this NDP and FC make? For that we will have to calculate GDP or GDP at MP. That is value of output in primary sector, value of output in secondary sector plus value of output in tertiary sector minus cost of intermediate consumption. Okay. So NDP at FC we will be calculating by gross value added minus depreciation, that is consumption of fixed capital, minus indirect taxes plus subsidies, that is the NIT formula. Okay. So NNP at FC equals NDP at FC plus NFIA. अब हम लेते हैं एक सम जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम जिसे हम NNP at FC कहते हैं। अब हमारे पास जो कंपोनेंट हैं, जो आइटम्स हैं, वो बेसिकली ज्यादातर करोर्स में दिए हुए होते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज गिवन सेपरेटली फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एंड द अमाउंट इज गिवन एज 4000, 1600 and 2400. Value of intermediate consumption, again it is given separately, primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector the amount is given as 2000, secondary sector it is 800, tertiary sector that is 400. Now indirect taxes paid by all the sectors is 320, consumption of fixed capital paid by all the sector is also 320, net factor income earned from abroad जिसे हम कहते हैं NFYA, subsidies 240. Now first we will have to calculate the GDP at MP और जिसे हम GVA at MP भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा, जो हमारे पास वैल्यूज या आइटम्स दे रखे हैं पहले हमें उन्हें मेंशन करना होगा। 1 minus 2 means from one first item second item will be subtracted and the total of first item is, that is value of output, 4000, 1600, 2400, that will give us the total of 8000, and the intermediate consumption is also given in the separate manner, that is 2800 plus 400, that is giving us the total of 3200. So 8000 minus 3200, that will give us 4800 crores. Now from GDP at MP we will be going to NV at MP, GV at MP minus number 4 means the consumption of fixed capital, because that is the difference between the gross and net. So 4800 minus 320, that will give us rupees 4480 crores. Then NNP at FC or national income we will have to calculate, that is NV at MP means the previous one will be taken as a raw material, and minus 3, that is indirect taxes paid by indirect taxes minus subsidies whatever is given as NIT, plus 6 plus 5, that is 4480 minus 320 plus 240 plus 80. So 320 plus का और 320 ही माइनस का आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 4480. So how we will be calculating it by value added method. Now numerical 2, we have to calculate net value added at market price and national income from the following data. अब हमारे पास क्या है? डोमेस्टिक सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक। और क्योंकि हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं, अब हमें क्या, और नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए पिछले न्यूमेरिकल में हमने बताया था आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग अलग दे रखा था। यहां पर इन्होंने सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से हमने इसको निकाला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 1, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स, 2 is production for self consumption, plus
3 minus 8, that is giving us the change in stock or closing minus opening stock. And the values are 15,000 plus 5,000 plus 2,500 minus 2,000, that is 20,500 we will be getting as value of output. Now, from value of output, we will be moving towards the NVA at MP. So, VO, that is value of output, minus number 7, that is depreciation, consumption of fixed capital, minus, that is intermediate cost, minus depreciation. So, 20,500 minus 13,000 minus 1,000, that will give us 6,500. Now, the last step which we have to calculate is net national income at factor cost. So, NVA at MP will be taken as a raw material. Then, minus number 5, that is indirect taxes, plus subsidies, that is will give us NIT, plus net factor income earned from abroad will be added. So, 6,500 minus 500 plus 250 plus minus 100 means that will give us the answer of 6,150 crores.